क्वेश्चन है फाइंड dy by dx if y is equal to x square minus 5 into 3x square plus 1। अभी दोनों algebraic टर्म्स है तो हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स का, एंड फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं। अदरवाइज हम प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हैं। सो लेट अस मल्टीप्लाई एंड देन टेक द डेरिवेटिव। तो मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट्स को। सो एक्स स्क्वायर इंटू 3x² ये हो जाएगा 3 टाइम्स x रेज टू 4, एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो ये आएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, -5 इंटू 3x² तो ये रहेगा -15x² एंड -5 इंटू 1 so that is -5। So we get y is equal to 3 times x raised to 4. अब x square minus 15x square is minus 14x square minus 5. And now we differentiate with respect to x. So differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to, अब 3 as it is रहेगा, it's the coefficient, so 3 times derivative of x raised to 4 minus 14 into derivative of x square, और 5 तो constant है, so minus derivative of 5। and now we apply the formula for derivatives। तो ये आएगा 3 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4 इज 4x क्यूब माइनस 14 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5 दैट्स अ कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव आएगा 0। सो फाइनली वी हैव 3 4 ये हो जाएगा 12x क्यूब minus 14 2s is 28, so minus 28x। So this is the value for dy by dx।